हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम यू। मैं कुछ बाइक राइड्स पे गया था कुछ आरी कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप होंडा CB300R जो एक डेढ़ महीना पहले लॉन्च हुई है उसके बारे में बात करिए। ओके, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम एन पैशनेट आरी पीपल आस्किंग फॉर डिटेल्स अबाउट अ होंडा बाइक। सो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं उसके बारे में। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सैडल बैग्स जो होंडा ऑफर करता है, राइट? एंड सैडल बैग्स इज़ अ बिग कॉम्पोनेंट ऑफ अ टूरिंग सेटअप। तो आई क्विकली टॉक अबाउट दैट एट द एंड। ओके, सो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स जंप स्ट्रेट इन टू इट। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मुझे खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। और प्लस आई वांट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर ऑल योर लव, कमेंट्स एंड सपोर्ट। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आपकी कमेंट्स और आपका सपोर्ट है तो मेरे वीडियोस हैं, राइट? सो डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। ओके, सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ होंडा CB300R जो एक महीना पहले लॉन्च हुई थी। ओके, इसमें एक रेड कलर भी आता है। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ कैफ़े रेसर स्ट्रीट फाइटर टाइप ऑफ अ बाइक। इट इज़ 286cc, 146 kgs इसका कर्व वेट है। ओके, एंड इट हैज़ अ 6 gears. Honda calls it as a cafe racer, or people call it as a cafe racer. Basically, this word has a history to it. In 19 let me just quickly tell you, in 1960s में London में people used to basically race between different cafes. Okay, and that's how the name came from. People wanted an agile and a quick bike, so they start a Footpex rear set. Okay, tank used to be a rectangular so that you can grip through your legs. It was not a fast, they never wanted a fast bike, but they wanted a bike which is agile and quick, so that they can do a race between different cafes, and that's how the word came. So there is a history to it, and Honda has kept that. If you can see the footpegs are little rear set, tank is rectangular, so अगर आपको grip करना है पैर से tank पे, you can do that. Okay, and so this is a pocket dynamo. मैंने इसको राइड किया है। ओके, दिस इज़ 31 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। ओके, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट मशीन। इफ़ यू हैव रिडन होंडा हाइनेस, आपको ये थोड़ी सी छोटी लगेगी, बट वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। इसकी पिकअप इतनी ज़बरदस्त है कि इट विल रीच 150 इन नो टाइम। Okay, it's like a pocket dynamo. So the target is basically the KTM and the BMW G300s of the world. उसका इसका target है। The design is very very good. I like the design. Although fuel tank is only 9 liters, which is a smaller, but the design, इसका जो silencer है, the way it is designed, इसका shock cups जो golden color में है, red and gold, looks really brilliant. So काफ़ी कुछ अच्छा है, काफ़ी कुछ is working for this bike. It's a new avatar. There was an old avatar which existed, which was discontinued. Now this is a BS6 version, and it's a new avatar that Honda has launched. Okay, you will like the bike, especially once you sit on it and throttle. ये बहुत speed है. It's a very 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 speed bike. Fast bike is the right word. Okay, so इसका curve weight 146 kgs है, but it feels even lighter than that, right? It's very very nimble. It's in great thing to drive in cities. In fact, on highways also, as I said, it's like a pocket dynamo. Okay, and Honda की branding है, so the bike has a quality. It looks premium also. When you look at it in the showroom, it looks pretty premium. So if you have an adventure in your personality, I think this bike will suit you. So it depends on different personalities of individuals, right? Some prefer a retro old school type of bikes, so people buy Highness. If you like the adrenaline rush at higher speeds, I think this is the bike for you. This bike is fast. This bike is fast, let me tell you. Honda says that this bike will reach from 0 to 100 within 6.2 seconds, right? So that's quick. And it has the dual channel ABS, so Honda has taken care of the safety parameters, which is a good thing. So at 3.3 3.4 lakhs on road, depending upon where you live,
people say this probably is slightly on the higher side. But you let me know, friends, what you think about this bike, what's working for this bike, what's not working for this bike. Do let me know through comments. Let's now talk about the saddlebags which Honda Big Wing is offering. So friends, as you know, saddlebags is a big component of your touring setup, right? And Honda Big Wing is offering Viterra bags, which is 60 liters of capacity, and it weighs basically about 2 kgs, 2.2 kgs, and it looks pretty decent on Highness. मैंने इसको clearly अच्छी तरह से देखा खोल के, you know, it looks pretty decent also. इसका inner lining is waterproof. Okay, एक Rhinox का भी आता है saddlebags, which also looks good on Highness. So these are two options mainly that people can choose if you own a Highness bike. I think it will work for any classic bikes as well. So इसका जो main compartment है friends, it basically has a top flaps and also has a heavy duty buckles. Outside में it has got a zippered pockets with storm flaps. You know, it will keep your documents and papers safe. Pretty decent at a 4,200. Even Rhinox का bag speed saddle bags also up the same price, 4,400 में आता है वो, and this is 4,200 में. So I think if you need a good quality bike saddlebags or a touring saddlebags, 60 liters के आसपास, 50 liters के आसपास, I think this is the price range. You have cheaper saddlebags also, 2,000 sub 2,000, but I've tried those. They don't work, you know, they don't look good, they don't look neat, but these are pretty decent. If you can spend about 4,000, this is pretty decent, you know. So friends, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. मुझे खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊं. और मुझे कमेंट करके बताना व्हाट यू थिंक अबाउट द सैडल बैग्स, व्हाट टाइप ऑफ सैडल बैग्स यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ सैडल बैग्स यू ओन, एंड ऑल्सो CB300R के बारे में मुझे कमेंट करके बताना व्हाट आर योर थॉट्स, you know. So see you in the next. Take care and bye.